physics. So on behalf of physics section, School of Sciences, I welcome you again to this concluding session. I would like to invite and welcome Professor Azhar Majid Siddiqui sir as a chief guest for the concluding session of today's session. I also would like to invite and welcome Professor Syed Najmul Hassan sir to occupy the seat under the dais. Sir. So my dear students and guests, along with my colleagues. Hello, I would also like to invite and welcome our conveners of this 2 days National Science Symposium, Dr. Rizwanullah Khansari and Dr. Firyaz, to take the seat on the dais. Ma'am, so in these 2 days, we had excellent sessions with meaningful and related, what we can say, keynote as well as invited lectures. And as Madam reported, around 26 participants have presented their research work in applied physics in their respective applied areas. So in future also, we would like to conduct and plan such academic activities. We will try our level best at the School of Sciences with the help of our Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hassan, as well as Registrar, Professor Sheikh Istaq Ahmad. So without them, we can't conduct because of financial support. So in the form of seminars, workshops, conferences, or minimum invited lectures by the experts in the concerned area. So we have right now 4 to 5 field research areas: atmospheric physics, cosmology, astronomy and astrophysics, biophysics, as well as material science. Recently, one professor joined here in our department with optical cryptography. So this is also very useful and applied field. So we'll try our best to conduct or to arrange for you people to take the advantage as well as benefit from these seminars, workshops, and symposia. Now, with this, I want to invite our convener number 1, that is Dr. Rizwanullah Khansari, because this time we have conducted 2 programs simultaneous. One is one on first day, National Science Day, as well as Science Symposium, which was our first physics symposium in the School of Sciences. So I would like to invite Dr. Rizwanullah Khansari to continue the concluding session. Thank you. Thank you very much. So just so that everybody knows what we have done in last 2 days or achieved, I would invite my co-colleague and convener, Dr. Priya Hassan, to come and give a brief report of what we have done in 2 days about the activities and presentations and the sessions. Dr. Priya. Yeah. So this year it was decided that the National Science Day, the celebration will be organized by a physics department, and therefore the talk which we had for National Science Day, the
Professor Azhar Siddiqui sir, who's sitting here with us. He gave us the talk for National Science Day, which was on 28th. That's how we started. But immediately after that, we started our physics symposium on current trends in applied physics. And actually, our department is a very varied department. All of us work in different fields. You have Rizwan working on theoretical physics, cosmology. I work on astronomy, astrophysics. Alim sir works on atmospheric physics, now even biophysics and material science. And we have Professor Rafiq sir who's into lasers, into optics. So since we have all these different fields, we decided the safest title for the symposium was current trends so that everybody could talk about whatever they want to talk about. And that is why we had different sessions. We had a session on astronomy, astrophysics. We had one on atmospheric physics. We had on lasers, optics. We had on material science. We had on various topics. And we had 6 invited speakers, including Professor Azhar Siddiqui sir, who actually spoke on various topics. Like Professor P.K. Suresh from University of Hyderabad, he spoke to us on cosmology. Then we had, today morning, we had Professor Anil Kumar Chaudhary, who spoke to us about his work, which is on material science, nanoscience, making materials. Then we had Professor Khalil Ahmed, who works on biophysics. And then in the afternoon, we had Professor Ashok Vayaduri, who actually spoke. He works in atomic physics, so he spoke on atomic clocks. And other than that, we had a lot of presentations by everybody, so I'm sure everybody enjoyed it. And like I mentioned earlier, since it was in hybrid mode, we have actually live streamed the whole symposium. It is there on YouTube in the IMC channel. So Manu has a IMC Instructional Media Center IMC channel, and it's there on the IMC channel. So you're most welcome to see the lectures once again if you want and share it with your friends. And I do hope everybody enjoyed the symposium. Thank you. Thank you, everyone. So now I would briefly request Azhar Siddiqui sir to say a few words. So you can say. I enjoyed it. I enjoyed it. So, ओके तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा हिंदुस्तानी में बोलूँ क्योंकि दिस बीइंग एन उर्दू यूनिवर्सिटी सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट वॉट एवर आई वुड वांट टू से वो उर्दू में ज़रा बोलूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा मेरे हिसाब से क्यों सर ठीक है ओके तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को देख के सेमिनार को देख के बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट्स से मिल के खास तौर से मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब मैं मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा था और प्रेजेंटेशन के बाद जो है जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन सब स्टूडेंट्स को भी ब्रीफ किया है कि आप लोग अपनी जो है जो डायरेक्शन है अपनी सोच है उस सोच को महदूद मत रखिएगा हम जो है फिजिक्स की फील्ड में आए हैं लेकिन अब ये ज़माना है जब मैं इस लैंग्वेज को जो है कोई बार ना बनाऊं एक बहुत अच्छी चीज़ जो है जो मुझे YouTube पर ही मिली थी इत्तेफाक से वो ये था कि मैं बच्चे को जो है जो महदूद कर रहा हूँ कि जो उर्दू पढ़ रहा है वो सिर्फ बच्चा उर्दू ही पढ़ेगा और कुछ नहीं पढ़ेगा जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो इंग्लिश ही पढ़ेगा और जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो फिजिक्स ही पढ़ेगा साइंस की दूसरी चीज़ जानता ही नहीं है ना तो अब ये जो लेवल है आज का जो टाइम है इस टाइम पे हम जो है किसी बच्चे को भी या किसी लर्नर को मैं बच्चा भी नहीं कहूँगा लर्नर एट दिस स्टेज आई फील माई सेल्फ दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखना है ना एंड दैट लर्निंग शुड कंटिन्यू फॉर टाइम्स टू कम है ना तो इस लेवल पर अगर मैं साइंस को जो है इंग्लिश में अपनी मदर टंग में ना समझूं तो फिर असल चीज़ जो है वो समझ नहीं पाऊंगा मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई थी वो मैंने पोस्ट डॉक के लिए जब अप्लाई करा था जर्मनी के उसमें
तो उनकी कंडीशन ही ये थी कि आप जब यहाँ पे आएंगे जर्मनी तो 6 महीने जर्मन सीखेंगे, उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। जो रिसर्च करेंगे वो फिजिक्स में रिसर्च करेंगे, लेकिन जर्मन सीख के करेंगे, जर्मनी में करेंगे। तो लैंग्वेज जो है वो बाहर नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश में जो है वो तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को जो है फिर अब साइंस का कितना चीज आपने अपनी जो बच्चा मदर टंग में क्या जो समझता है वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कितना समझेगा, है ना। तो ए टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू इवॉल्व इन सच ए सिचुएशन कि हमको जो है अपने लैंग्वेज को ही बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चा जो हमारी इस यूनिवर्सिटी के कायम करने का भी मकसद है कि पीछे ये भी था ना, जो फोर फाउंडर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, उर्दू यूनिवर्सिटी के, उन फोर फाउंडर्स की जो है उनकी दिशा, उनका जो वो था ऑप्शन था, उनके सामने जो ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में ये भी था कि हमारी अपनी मदर टंग में हम साइंस को समझा करें। और इसी की बेसिस पर हमने उर्दू साइंस कांग्रेस शुरू करी थी, वो समवेयर इन 2015-16 when Professor Aslam Parvez Sahab was there in Maulana, sorry, that Zakir College। तो वहां से हमने शुरू किया। फिर हमारे असलम परवेज साहब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू कराया गया, एंड देन वी वांट टू कैरी इट फर्दर। बीच में खैर जो भी प्रॉब्लम्स आए, लॉकडाउन लगा, सारा कुछ हुआ, लोग बदल गए, अब काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई, लेकिन अब फिर वी कैन अगेन बी बैक ऑन द ट्रैक, फिर उस रास्ते पर हम आ जाएं और फिर इस इल्म को, है ना, इस इल्म को हम और आगे बढ़ाएं, है ना, महदूद ना करें, लैंग्वेज की वजह से महदूद ना करें किसी भी चीज़ को, है ना। बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं जब ये अपने फॉरेनर्स को देखता हूँ तो एट द एज ऑफ 70 वो कह रहे हैं कि आई वांट टू लर्न दिस थिंग, मुझे ये सीखना है, क्या कर रहे हैं आप। आई वाज सरप्राइज्ड एट दिस स्टेज, उनका जो है जो जज्बा है उनके अंदर सीखने का, है ना। तो ये सीखने वाली चीज जो है वो बच्चों में आ जाए, जो चीज उन तक है वो हमारे बच्चों में आ जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो विद दिस फ्यू वर्ड्स आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Professor Azhar, for such inspiring words. We move on. Now, I would like to invite guest of honor for this valedictory function, Professor Najmul Hassan, to share his thoughts. Assalamu alaikum, good evening. Hello to everyone. I'm honored to be the chief guest or guest of honor for this function. I didn't know that. And we are very happy to have Professor Azhar Majid Siddiqui Sahab with us for both the days. And we wish he would continue to spend some more time in our campus. आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिलसिला शुरू हुआ था उर्दू साइंस कांग्रेस का, वो अभी बरकरार है। ये लास्ट ईयर भी हमने की थी, लेकिन हाइब्रिड मोड में थी, और ये साल भी होने वाली है। ये जो सिंपोजियम था ये तो ज़्यादातर अंग्रेजी में हुआ, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल who had joined in from outside. And the only difference which has happened since the time Professor Aslam Parvez left and this is that we are so we are doing it in one hybrid mode. And secondly, we have gone a bit more technical. जो पहले हुआ करती थी वो बहुत ही, हमने देखा था, बहुत ही बेसिक साइंस डिस्कस हो रही थी, तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा और उठाएं, और उसी लिए वी ओपनड अप कि अंग्रेजी या उर्दू में जिसमें भी पेश कर सकते हैं, वी परमिटेड दैट। बट मेजर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस इवन लास्ट ईयर वर इन उर्दू। तो ये सिलसिला जारी है, अभी अगले हफ्ते भी मंडे ट्यूसडे को फिर होगी जी। तो अगर आपको वक्त नहीं है हैदराबाद में रहने का तो आप
ऑनलाइन जुड़ जाइए. It will be a pleasure to, yeah, it was a pleasure to hear you, sir. Your keynote address was very enlightening, and it motivated a lot of our students in doing sciences. तो जैसा प्रोफेसर अजहर माजिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जब मादरी ज़बान में हम सीखते हैं तो जो बैरियर होता है ज़बान का वो नहीं होता, तो ज़्यादा आसान हो जाता है कुछ चीज़ को समझने का. तो हम यही करते हैं मानो में कि समझाते हैं उर्दू में, क्योंकि सारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर बायलिंगुअली हम उनको तैयार करते हैं कि जब वो ख़त्म कर कर जाएंगे, they have to face the world and you have to be on par with anybody else. इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट्स जो कम ख़त्म कर रहे हैं कोर्स और जा रहे हैं, वो हर नेशनल यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल रहा है और वो बहुत खूबी से काम कर रहे हैं. जैसे कुछ लोग चेन्नई गए हैं, कुछ लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और हमको बहुत खुशी है कि यू आर डूइंग वेरी वेल. Or I'm very happy to see the students are still here on the second day, even at this time. And I congratulate Alim Saab for heading this whole thing and having a very successful symposium. It was very interesting even for me, though I'm from mathematics, but physics is very dear to me. Even as a student of mathematics, I always attended courses from in the physics department in university, and so I'm both the both directions, and I was very fascinated to hear talks in this symposium, and we are looking forward to many more such things. Thank you, and I wish all the best. Thank you, sir. We tried our level best, but definitely there must be some shortcomings. Or if it was really good also, so for that we need your feedback for to know of our shortcomings and to know and to if you want to praise us or whatever. So we need feedback. So if any of the students, not money, but because we have time shortage, so one or two students or participants, if they want to give feedback, they can come. And if online participants also want to give feedback, they can message or they can unmute. So anybody from here, first we'll take the offline participants. बोल रहे हैं? Anybody. अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स हम लोग के डिपार्टमेंट में होती हैं। साइंस एक बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है और जो साइंस का डोमेन है वो वाकई में बहुत संजीदा है। उर्दू वाले तो मतलब मीर के दो शेर बोल देंगे और तालियां बज जाती हैं, लेकिन जब तक साइंस का तालिब इल्म ऑडियंस को बहुत टिपिकल चीज़ें भी ना समझा सके तब तक तालियां तो बहुत दूर, मतलब सामने से एक मुस्कुराहट भी नहीं आती उसके लिए। तो साइंस इज समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट लेवल पे भी हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बना था, सिर्फ उनका मकसद तालीम देना ही होता है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ सबसे खास बात यही है कि यहाँ तालीम के साथ साथ अच्छी और सकाफती तरबियत भी तलबा की जाती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ ये मौके सबको नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम लोग को मिलते रहते हैं जहाँ स्टूडेंट्स खुद फेलिसिटेट करते हैं, आगे आगे प्रोग्राम करते हैं। सर ये प्रोग्राम महकूम सर और सारे स्टूडेंट सारे टीचर्स ने मिलकर किया है, लेकिन इसके पीछे जो स्टूडेंट्स को जब इन्वॉल्व करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जल्दी जाओ सर्टिफिकेट लेके आना है। तो वी हैव टू मैनेज समथिंग इन अ वेरी लिटिल बिट ऑफ द टाइम। बहुत कम समय है और उसको मैनेज करना है हमें। जल्दी भाग के जाओ, वहाँ से लगेगा टाइम, काम वही है लेकिन वक्त कम है। तो कहीं ना कहीं हमें टाइम मैनेजमेंट, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन और एक जो टीम वर्क होता है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, अपनाइयत का एहसास कि ये हमारा काम है इसलिए हम करेंगे, तो ये सब चीज़ें अगर किसी एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाती है तो आई थिंक दिस इज द गुड। और साइंस का यही सबसे अच्छा मकसद होता है और वो कुछ हम यहाँ सब कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। Anyone else? अस्सलामुअलैकुम। इस मौके पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, हम आज कामयाबी के साथ ये मुकम्मल कर पाए हैं।
और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं खुद सोच रही थी कि इतने ज़्यादा लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आए और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ। और अब ये ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा हम जज्बाती महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से लगे हुए थे कि ये है वो है, ये बच गया वो बच गया, सब चीज़ें हो रही थी। यहाँ आके मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ, बायोफिजिक्स में कर रही हूँ मैं। जुबेरिया इरम नाम है मेरा, और अलीम बादशाह सर के साथ मैं काम कर रही हूँ। और बहुत मैं जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में लोग हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, दोनों कन्वीनर्स का भी, और हमारे जीनत मैम और महकूम सर, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और खलील सर और मुजीब सर, ये सब लोगों ने बहुत इसमें काम किया है। और रफीक सर भी, मतलब उनकी शायद ठीक नहीं थी, लेकिन हमेशा सारे 2 दिन भी वो अटेंड कर रहे थे। और अलीम सर जो इसके करता धरता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी रखेंगे और साल के बीच में भी रखेंगे। ऐसा हुआ कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ हो गए तो थोड़ा हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। एक तरफ दिल वो मैटलैब में भी था और थोड़ा दिल सिंपोजियम में था, तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि गैप हो बीच में, ताकि हम दोनों तरफ दिल लगा के काम कर सके। और जो भी हमसे कोताही हुई उसके लिए माजरत, शुक्रिया। You can unmute themselves. So online participants, if you want to give any feedback or say anything, you can unmute yourself. Open your camera. If you want to speak, unmute yourself and open the camera. Soundarya ma'am, you are there. You want to say something? है, 8-10 लोग हैं. Oh, if not, let us. Okay, but brief, very brief. Yeah. Assalamu alaikum. Myself, Meraj Madani. I am pursuing PhD physics. So, within 2 days, we have learned different fields: optics, lasers, and material sciences, and atmospheric physics. Listening to this lecture within a short interval of time it's amazing and excellent experience. So, we thankful to our head of the department, Dr. Alim Basha sir, and the whole team who are effortlessly, they work very hard work they have done within 2 days. So, organizing this 2 days workshop, it took weeks of time. Mahkum sir, Priya Hassan ma'am, Rizwan sir, and all the conveners and all the faculty members, research scholars, students, BSc and MSc students, are thankful to them for making this event successful. And thank you, sir. And especially I thank to sir, Azhar Siddiqui sir. So we have interacted with you in the interval of time. So we have very good experience with interacting with you. Thank you, sir. Thank you, Meraj Madani. Actually, I'd like to inform the students, Azhar sir is going to stay tonight on the campus, and tomorrow also till afternoon he is there. So if you want to interact, you know he's doing very cutting edge research, application based, so you can interact. So now we come to the most important part of any conference and workshop for which we attend, that is the certificate distribution. Okay. So most of the students are participants have participated online, some have left. So those who are present, we will give you the certificates. I'll be calling out the names. First, I request Professor Azhar Majid Siddiqui to do the honors. So I'll just call on the. Yes, and I will do it.
So the first person, actually, you should really give a big round of applause. In spite of being the convener of the workshop, she took the time to give a presentation. So we should really appreciate that. So Priya ma'am. Thank you. Thank you. So the next. So next we have Mr. Praveen Kumar. He is research scholar from Usmania University. Praveen. Just if needed anything, just. Mohammed Tayyib. He's here. Juveria Iram. Altaf Ahmed. Mohammed Abdul Mujib. Mohammed Abdul Mujib. Komel Murtuza. Mohammed Shehbaz. He's not here. Shehbaz. Miraj Madani. Aparajita. Mazhar Subhani. Thank you, Azhar sir. Now I request Professor Najmul Hassan to distribute the certificates. Saiban Ahmed. Sarfaraz Alam. Mohammad Siad. Sayyid Tawfiq Uddin. So, some of our BSc students have participated. They are in final year. So really we should encourage them for their participation, and also they have been great volunteers to us. So I would like to invite them. Shahid, Mohammed Shahid. Uh, thank you, Professor Najim sir. So now I request Professor Alim Basha to. Thank you so much, sir. Zafar, he's here. Mohammad Zaid. Tausif. Nadeem. Mustafa. Want to give one certificate to our convener. Who, sir? I just have one comment. This certificate we know. This certificate that just received
they are nothing shorter than receiving the degree from the university किसी तरह भी कम तर नहीं है ये छोटा सा वैसे एक मार्क ऑफ अप्रिसिएशन है बाकी अल्लाह ताला आपको और तरक्की So we are on the last item of this workshop, which is very important part of any workshop or any lecture, that is proposing vote of thanks. So I would begin by apologizing if I forget to take anybody, because there have been so many people involved in this. So let me just begin with thanking the authorities of the university, the Honorable Vice Chancellor and Registrar, who have given approvals, and more than that they have been encouraging and supportive of all this kind of events. So we thank them for giving us this opportunity. We would like to thank Dean, who had like time to time be there with us for whatever we needed. Then we would like to thank our staff of the physics department, who were like if not they were not present, but the whole idea or planning of this, conceptualizing this workshop, each and every faculty member of physics, Khalil sir, Rafiq sir, Mahkoom, Zeenat, Priya ma'am, myself, and of course Alim sir is there always. He's leading us. But I would especially like to thank Dr. Mahkoom and Dr. Zeenat. They are like the young faculties of the department. They have taken the initiative of like taken the initiative of this. The rest of the things followed, like all the planning, and also we would like to thank Dr. Mahkoom and Dr. Zeenat for taking the initiative. Then I would like to thank research scholars who were involved all through us in planning and all. Sometimes we scolded them because they were not there, but at the last moment they like worked day in and out. And our MSc students, BSc students, all of them like have helped us in every way. And all the students volunteers who helped us. Then special thanks goes to, like, we don't see them on stage, but the non-teaching staff, like we have our physics staff, especially Mr. Faratullah, Mr. Mazhar Pasha, Amit Kumar. So they are like the persons who are like running the show behind us. And I would like to thank one person which I have been thanking from yesterday, is Dr. Priya Hassan. She is convener, but she's been sitting 2 days non-stop from 10 to 5 and handling the online this thing. And you see in many conference nowadays, even though it's become norm that we are going online, but you see so many glitches or problems in online, like Zoom, everything, managing every online presentation. But ma'am has been sitting patiently for 2 days, and that's why our online participant did not face any problem or any glitches. So I would like to thank her specially for that. And in the end, okay, I would thank her as like convener, one of the conveners. She has given her inputs and like been with us. Finally, all the technical departments of the university, be it the estate section, engineering section, instructional media center, dean office, and who all supported us. I would like to thank everyone. Civil Service Academy, we have taken their building, and their staff also have helped us today and like from last 2 3 days. So I would like to thank one and all who has supported. Even the photographer, he has captured very nice moments. So finally, I thank. If I have missed everyone, I could not take. मैंने जैसे हम उर्दू में इसको अच्छा बोलेंगे, मैं फर्दन फर्दन सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिनका भी नाम छूट गया है मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा. और फाइनली इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ही इज हेड. आप लोग जानते हैं कि अलीम सर इज द पर्सन हु लीड्स. हम लोग कई बार प्रॉब्लम, टेंशन या कोई इशू, ग्लिचेस में आ जाते हैं, तो he has been very like guiding us throughout this. So thank you, Alim sir. And one person, Najam sir, he is professor of mathematics, but he always helps us in our physics any program. So thank you, Najam sir, and thank you one and all for participating. And last, I was going to forget it, but I would like to thank the participants, without whom any conference would not be a success. So people who have joined online,
some are not there today, but from yesterday, all those who participated, those who present online, offline, all the participants, it's because of you. We believe that this, at least this conference was a success. So thank you very much, and we hope to organize this such conferences in future. And next year we will continue with the same thing. So we expect you to join next year also, and whatever the shortcomings we had, we will try to improve next year. So with these words, I would like to conclude this with the permission of the chair. We come to the end of this conference, 2 days national symposium. Thank you everyone. So now please stand up for national anthem, and those who are online, they should also. So we'll play the national anthem. Thank you everyone.